अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बनाम खुदाए मेहरबान रहीम। होपिंग यू विल बी फाइन। कैसे गुजर रहे हैं आप लोगों के दिन? ठीक गुजर रहे हैं? अल्लाह आप सबको कोरोना और इस जैसी मूजी अमराज से महफूज फरमाए। हम कोशिश तो कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से आप लोगों का स्टडीज़ के साथ टच रहे, आप लोग स्टडीज़ के साथ इन कॉन्टेक्ट रहें। बट somehow if you people got any problem, अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो यू कैन कॉन्टेक्ट अस। आप हमें रब्ता कर सकते हैं। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो एक वीडियो लेक्चर में हम कवर नहीं कर सकते। मीन्स कि थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता है कि हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते। मीन्स कि जितना हम कर सकते हैं इतना तो करके हमें चीज़ें रह जाती हैं। उसकी वजह ये है कि बहुत सी चीज़ें स्किप इस वजह से हो सकती हैं कि क्लास का डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं है और क्वेश्चन रेज नहीं होते। तो जब क्वेश्चन रेज नहीं होते तो बहुत सारी चीज़ें फिर नोइंगली या अननोइंगली रह जाती हैं। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन रह जाता है तो यू कैन आस्क एनी टाइम, कभी भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ द रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की। रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस क्या? ओके, द application of the recombinant DNA. Just a minute. Application of the recombinant DNA technology using prokaryote. We will discuss it regarding the crown gall disease. Applications of the recombinant DNA. I told you that we will discuss about the regarding the crown gall disease. Organisms containing introduced foreign DNA are referred to as being transgenic. ऐसे organisms जिनमें हम कोई भी foreign DNA इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, those organisms are known as the transgenic. Means the transfer of the genome, means the transformation of the genome, कि gene उनकी transfer हो गई, उनके alteration of the genome. The introduced foreign genes is called the transgene. The gene which is being introduced will be the transgene. Hence, bacteria containing eukaryotic genes are transgenic bacteria. So, this is right now well clear that organisms will be transgenic, gene will be transgene, or the bacteria that will contain the eukaryotic genes will be the transgenic bacteria. Such transgenic bacteria culture can be used as the factories for the synthesis of valuable eukaryotic proteins, because by using these bacteria we can make a lot of required protein. The term biotechnology is actually the name given to this area of research. Biotechnology is actually the amalgam of the biological sciences and the industry. You can say the technology by using the microorganisms for the betterment of the human being is known as the biotechnology. The applications of the recombinant DNA techniques in the commercial enterprises this is known as the biotechnology. There are many patented designer organisms, both eukaryotic and the prokaryotics, are already finding widespread use, and the biotechnology is expected to become a dominant sector of the economy early in the 21st century. In the 21st century, there was a lot of work done on the biotechnology. Many organisms were transgene. Many organism was made transgenic, so we can get the remedies for the human requirements. When bacteria are used to produce a eukaryotic protein, it is desirable to design the system so as to produce as a large an amount of the protein as possible. We use these transgenic bacteria to produce a large number of the proteins. Especially, say for example, if there is an insulin, uh, we need, say for example, we need the insulin, and we don't have and we don't have insulin in you can say in large amount. So we will transgene a bacteria with the insulin gene, and then
uh, by using these bacteria, we will produce a lot of insulin protein. There are several such systems for the overproducing foreign proteins in the E. coli. Um, but for this production, for the production of eukaryotic protein in the prokaryotic cell, we need a specific system in the prokaryotes. One system uses the phase T7 RNA polymerase operating on the T7 promoter. Uh, in later phases of infection, phase T7 synthesizes enormous amount of gene products for several sites termed as late promoters. Because host chromosome genes are not synthesized at this point, these products are the only protein synthesized. These products are the only protein synthesized. So, for example, in the figure you can see here, I told you that we introduce the say for example, if we need to transgene, this is the recombinant. Recom- just a minute. I'm going to use the pointer. This is recombinant E. coli chromosome. This E. coli contains the T7 RNA polymerase gene. Here, this green one is the T7 say for example RNA polymerase gene. Okay, this is the lac promoter. Okay, here is the T7 RNA polymerase gene. Multiple T7 RNA polymerases will be produced from this organism. T7 late promoter, there is the factor 8 cDNA. This is the plasmid. So, for example, here this late promoter is inserted. Okay, and we need to produce the factor 8 cDNA here. So if we introduce the T7 late promoter here, a large number of very high level of the factor 3 proteins will be produced. So here you can see we need to do two things. Okay, यहाँ पे आप लोग देखें, पहले हमने जो बैक्टीरियल क्रोमोसोम है उसको, फॉर एग्जांपल प्लाज्मिड है या क्रोमोसोम वटेवर, हमने उसको ट्रांसजेनिक किया है T7 RNA polymerase का जीन इंसर्ट करके एडजेसेंट टू द लैक प्रमोटर. ये T7 RNA polymerase जीन लैक प्रमोटर के साथ हमने इसको यहाँ पे इंसर्ट करवा दिया. अब इसका नतीजा ये हुआ कि T7 RNA पोलीमरेज के जीन हमने देखा कि जब लैक प्रमोटर के जीन लैक के जीन यहाँ से हिट किया और ये लगा दिया हमने, तो मल्टीपल आरएनए पोलीमरेज यहाँ पे प्रोड्यूस होना शुरू हो गए हैं. लेकिन अगर हम इसी के साथ ही लैक प्रमोटर के साथ, अगर हम साथ ये T7 लेट प्रमोटर के साथ अगर हम यहाँ पर ह्यूमन ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 8 का डीएनए का जीन या सीडीएनए का जीन यहाँ पे इंसर्ट कर देते हैं, तो बजाय इसके कि अब ये T7 आरएनए पॉलीमरेजेस बने, यही T7 लेट प्रोमोटर को यूज़ करके, तो अब इसी प्लाज्मिड से हमें वेरी हाई लेवल ऑफ फैक्टर 8 प्रोटीन्स मिलना शुरू हो जाएंगी. एग्जाम्पल now you can see, there could be many example. Now many proteins such as the human insulin, as I already told you about, growth hormone and wide range of the pharmaceuticals are mass produced from the genetically engineered bacteria and the fungus. Similarly, figure 13.8 is showing an example in which the genetic engineering is resulting in a drug that happen to give us strikingly different colors to the bacterial colony when streaked into the petri plates. Yeah, we have already discussed about the screening of the recombinant DNAs containing bacteria. So here you can see, if you can see, this is the bacterial promoter, the lax gene. We inserted the insulin A chain, and here we inserted the insulin B chain, and then we introduced both of these plasmids into the, so for example, into the bacteria, grow them, culture them. Lax this bacteria will produce the A chain, and this bacteria will produce the B chain, and then both of these chains will be mixed, and we will get our required active insulin molecule. Similarly, the expression of the growth hormone in the E. coli, the human signal sequence is
The human signal sequence is first removed, enabling the protein to be produced in the bacterial cells. The product contain an extra bacterial methionine. This product will contain an extra bacterial methionine actually, because this is being synthesized in the bacterial cell. A bacterial signal sequence, bacterial why this methionine is present, because we have already removed our required signal. Human signal is removed, so bacterial signal is added. A bacterial signal sequence that target the protein for secretion to the outside can be added. In this method, the product has no extra methionine. Okay. Next, recombinant DNA technology in the eukaryotes. We are moving ahead toward the eukaryotes. If we talk about the eukaryotes, we will go from simpler to the higher organism. Let's say, for example, we will first discuss about the yeast, and then we will go upward. The techniques for the gene manipulation, cloning, and expression were first developed in the bacteria, but are now applied routinely in a variety of model eukaryotes. The genome of the prokaryotes are larger and more complex, so modifications of the techniques are needed to handle the larger amount of the DNA. यूकेरियोटिक क्रोमोसोम्स ज़्यादा कम्प्लेक्स होते हैं एज कम्पेयर टू द बैक्टीरियल, एज कम्पेयर टू द प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम्स। क्योंकि ये ज़्यादा कम्प्लेक्स हैं, इस वजह से इनको हैंडल करने के लिए जो हमारी रिकमेंडेड डीएनए की टेक्निक्स हैं, हमें मॉडिफिकेशंस रिक्वायर होती हैं। फॉर एग्जांपल, सम यूकेरियोटिक प्रोटीन्स कैन नॉट बी easily expressed in the large amount in the bacteria. Bacteria cannot produce a large amount of some proteins, but eukaryotic expression system need to be employed here. Where the bacterial system cannot help us a lot, we use the eukaryotic system. Firstly, we'll go toward the transgenic yeast. The yeast Saccharomyces cerevisiae has become eukaryotic model for the recombinant DNA technology. One of the main reasons is that the transmission genetics of the yeast is extremely well understood. In yeast, another important advantage is the availability of circular 6.3 kilobase per natural yeast plasma. Yeast also contain a plasma, so this is the advantage by you for using for using the yeast. This plasmid, which has a circumference of 2 micrometer, has become known as the 2 micron plasmid. It forms the basis for several sophisticated cloning vectors. This plasmid is transmitted to the cellular product of meiosis and mitosis. The simplest yeast vectors are derived of bacterial plasmid into which the yeast locus of interest has been inserted. When transformed into the yeast cell, these plasmid inserted into the yeast chromosome, generally by homologous recombinations with the resident gene and by either a single or double crossovers. As a result, either the entire plasmid is inserted or the target allele is replaced by the allele on the plasmid. Such integrations can be detected by plating cells on a medium that select for the alleles on the plasmid. Because bacterial plasmid do not replicate in yeast, integration is the only way to generate a stable modification genotype, a stable modified genotype with the use of these vectors. So we can understand that simplest derivation of the simplest yeast vector is actually the derivative of the bacterial plasmid. This is derived from bacterial plasmid, and then after deriving from the bacterial plasmid, we insert it into the yeast by a recombination method. This recombination may be single, maybe because of the single or the double crossover. Uh, when the crossover take place, then as a result, either the entire plasmid is inserted into the target site, or targeted allele is actually replaced. Both can happen. Either the entire plasmid is replaced, is inserted, or a single allele is replaced. Such integrations then need to be detected on the selection media. Because until or unless we select the organism with the transgenic, with the recombinant DNA, we cannot find out the way to determine whether this is because of the recombinations or not. So bacterial plasmid, because bacterial plasmid do not replicate in the yeast, because it cannot replicate in the yeast, bacterial plasmid cannot use the yeast machinery. So integration is the only way to generate a stable modified genotype with the use of these vectors.
Yeast vector, yeast integrative plasmid. There are several types of the yeast vector. One is yeast integrative plasmid. Second is the yeast episomal plasmid. Then yeast centromere plasmid, and then yeast artificial chromosome. These are the four yeast vector. We can have four types of the vectors from the yeast. Yeast integrative plasmid. This is the type of yeast vector has a bacterial origin of replication and the bacterial selective marker. Integrative plasmid contain the parts of some genome from the bacteria, mostly the bacterial origin of replication and the selective marker. Yeast episopal plasmid, this type of yeast vector exists as an episome at the high copy number per cell. Um, and work just like a bacterial plasmid. Um, there are some episomes which are present in the yeast. They contain the genome. They contain the episomal genome, and this episome can work like a bacterial plasmid. Yeast centromeric plasmid. This is the circular plasmid containing a cloned yeast centromere. We just clone the yeast centromere and make the plasmid. Centromere plasmids are maintained at one copy per cell, just like small circular chromosome. Then yeast artificial chromosome. The addition of yeast telomeres to a centromere containing a plasmid create a yeast artificial chromosome capable of accepting very high, very large inside. Mm, you can say yeast artificial chromosome contain the centromere, telomeres of the centromere and the telomere of the yeast, and then some of our gene of interests. This is the yeast integrative plasmid. You can see here the selectable bacterial marker, and this is the bacterial replication origin, and these are the clone region of interest. Uh, Yeast episomal plasmid. This is episomal plasmid. This is about 2 micrometer plasmid DNA, and this is the yeast centromere plasmid. We use just centromere, centromeric region of the yeast application of origin here, and then yeast artificial chromosome. This is the telomeric region, and here somewhere this is, say for example, yeast centromere. This is yeast origin of replication, and here the genes for the selectable marker. This is the clone site where we inside our gene of interest. Applications of the recombinant DNA technology using eukaryotes, transgenic plants. The application is there are many applications regarding the transgenic organisms. First, we will discuss about a little bit about the by using prokaryotes in the eukaryotic systems. Agrobacterium tumor fusions, uh, agrobacterium tumefaciens, pathogen and useful tool. And this is actually the plant pathogen, and can be a useful tool for the transgenic plants. It's a plant pathogen that induces tumor on about 60% of dicotyledonous angiosperms and gymnosperms. This tumor induces property also make it a valuable tool for introducing genes into the plants for research and the agriculture purposes. Crown gall disease. This is the crown gall disease. Here you can see the crown gall on the different parts of the plant. This disease is caused because of the uh, agrobacterium. First of all, this was discovered by the Frediano Guevara in 1897. He found that a bacterium is causing crown gall in the grapes. In 1907, crown gall is gall is actually caused by the bacterium in 1997. Erwin Smith and Townsend isolated a bacteria from the gall on daisy. When inoculated on to other plants, gall were produced. They isolated they isolated. Say for example, here they isolated from this plant, culture this, and then separate on the other plants, and the gall was developed. Usual component called the opines are found in many crown galls. The type of opines is determined by the bacterium, not the plant. The opine which is creating this disease, which is responsible for this disease, is produced by the bacterium. It's actually the octopine utilizing, there are two types of the stain on the basis of the opines. Octopine utilizing strains and nopalines utilizing strains.
Um, the type of opine, what will be the type of opine? It is determined by the bacterium. Octopine, this is the structure of octopine and nopalines. Question, there are some questions regarding this. What are these compounds? Do they cause the tumor? And how and why do the bacteria cause the plant to make opine? This is because of the plasmid inside is such kind of bacteria. Nopalin plasmid carry the genes for synthesizing nopalin in the plants and for the utilization in the bacteria. Okay. Then octapine plasmid carry the gene to synthesize octapine in the plants and catabolism in the bacteria. Agropine plasmid carry the genes for the agropine synthesis and the catabolism. Okay. Agrobacterium induced gall do not require bacterial persistence. Gall tissues without any bacteria can persist indefinitely in culture, in contrast with most other pathogen induced neoplastic growths that require the presence of the pathogen. Brown made fundamental discoveries about how bacterium transform plant cells. So, for example, this is normal plant. The first one is a normal plant. Tissue cannot live indefinitely in the hormone-free medium. Normal plant tissue growth and survives when auxins and cytokines are added to the medium. With normal plants, we try to grow them. In the medium, they will not grow. But if we add auxins and the cytokines, they will grow. Crown gall tissues grows well without added hormones. There is no need to add the hormone if we introduce the crown gall over here. A few days after inoculation, tumors become independent of the bacteria. When a tumor is established, then it becomes independent of the bacteria. Now it can spread automatically. No, it's spread. No, it can be spread by itself. A large plasmid in the gall inducing agrobacterium confers virulence. Large plasmid is actually responsible for this virulence. If there is no plasmid, there will be no virulence. Say for example, first one is the virulent bacteria, second one is the avirulent. The virulent contain the plasmid. If we heat kill this bacteria, if we heat kill this virulent plasmid, or if we damage the plasmid of such bacteria, there will be no tumor. But if we mix virulent and the non-virulent, and then virulent will be transformed into the plasmid containing bacteria. If it contains a copy of plasmid, then it can also develop a tumor. Some DNA from the TI plasmid is transferred into the plant cells. We can now develop a system where we can transfer the plasmid in the plant cell. The key finding was that the TI plasmid DNA anneals with the DNA isolated from the crown gall, meaning that the gall contains TI DNA. So this TI plasmid is actually responsible for the generation of the crown gall disease. The virulence genes are required for the tDNA. The virulence VAR genes are required for tDNA movement into the plant cells. These VAR genes move the bacterial DNA into the plasmid, where the plant cells become transformed into the transformed and produce the desired or the requirements of the bacteria, and the gall is developed. This is actually the tDNA plasmids. For example, is in the plants. When this T4 DNA when this DNA is inserted into the plant cell, it will contain the auxin synthesis and cytokine synthesis, and then they also contain the region for the opine synthesis to feed the agrobacterium. This part of the DNA, this part of the DNA containing, okay, again here, say for example, okay,
दिस इज द बैक्टीरियल डीएनए। मैं थोड़ा सा आपको अपनी, ये बैक्टीरियल डीएनए, ठीक है, ये मूव करता है फ्रॉम द एग्रोबैक्टीरियम इनटू द प्लांट सेल। ठीक है, हम जब ट्रांसपोजोन्स पढ़ेंगे तो उसमें ये मैकेनिज्म थोड़े से और ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएंगे। अभी हम उसके बारे में नहीं पढ़ा, तो जब ट्रांसपोजोन्स के बारे में हम बात करेंगे तो उस पर ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये जो पार्ट है टीडीएनए का, ये जंप करता है, ये मूव करता है फ्रॉम द बैक्टीरियल प्लाज्मिड इनटू द सेल। ओके, अब ये जो पार्ट मूव कर रहा है, इट कंटेन सम रीजन्स, इट कंटेन सम डीएनए फॉर सम स्पेसिफिक फंक्शन। इस डीएनए के ऊपर एक पार्ट है जो ऑक्सीजन को सिंथेसाइज करवाता है, एक पार्ट है जो साइटोकाइंस को सिंथेसाइज करवाता है। ठीक है, एंड दिस साइड इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर दी ओपाइन सिंथेसिस। मैंने आपसे ये कहा था कि प्लांट्स बैक्टीरिया के लिए ओपाइन को सिंथेसाइज करते हैं और बैक्टीरिया उन ओपाइंस पे फीड करते हैं। और फिर मैंने ये कहा था कि दिस इज एक्चुअली डिसाइडेड बाय द बैक्टीरिया। बैक्टीरिया डिसाइड करता है कि कौन सा ओपाइन जो है उसको चाहिए। अगर तो ऑक्टापाइन के जीन्स उसमें होंगे तो वो ऑक्टापाइन प्रोड्यूस करवाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये जीन्स जो हैं ऑक्टापाइन की हैं, फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे ऑक्टापाइंस प्रोड्यूस होंगे, और अगर ये जीन्स नोपालाइंस के हैं तो यहाँ पे नोपालाइंस प्रोड्यूस होंगे। यानी कि ये पार्ट जो है ये प्लांट सेल में इंट्रोड्यूस करवा दिया जाता है। अब नोपलिन या ऑक्टापाइन या यू कह लेंगे ओपाइन जो हैं, दीज आर द रिक्वायरमेंट ऑफ द बैक्टीरिया। प्लांट्स इसको सिंथेसाइज और खुद से नहीं करते अनटिल और अनलेस ये बैक्टीरिया का पार्ट इसमें इंसर्ट ना हो जाए। बैक्टीरिया अपना डीएनए उसमें इंसर्ट करवाता है ताकि प्लांट्स ओपाइंस उसके लिए प्रोड्यूस करें। ठीक है, तो जब ये पार्ट प्लांट्स में इंसर्ट हो जाता है तो उस वक्त प्लांट्स इस बैक्टीरिया के लिए ओपाइंस को प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। समझ आ गई? ओके, ओके, नाउ वी आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड। The TA plasmid can be used to introduce any gene into the plants. No, if we recognize the part of the plasmid, if we recognize this part of the plasmid, we can alter this part. अब हमें पता है कि जी ये ऑक्सीजन सिंथेसाइज करता है, साइटोकाइन सिंथेसाइज करता है और पाइन सिंथेसाइज करता है। इसमें से कौन सा पार्ट हमें रखना है और कौन सा पार्ट को हमने आल्टर कर देना है, दिस इज अप टू अस। हमें इसमें वो पार्ट रखना है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस जीन को बैक्टीरिया से प्लांट में मूव करवाने की है। लेकिन पैथोजेनेसिटी की जीन्स हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम नहीं चाहते कि ऑक्सीजन की जीन्स आए, साइटोकाइंस की जीन्स आए, हम नहीं चाहते कि ओपाइंस की जीन्स वहाँ पे आए, क्योंकि ओपाइंस प्रोड्यूस हो गए तो बैक्टीरिया उस ओपाइन के ऊपर फीड करेगा, प्लांट ने फिर वही बात है कि डिजीज हो जाना है। हम प्लांट की डिजीज, हम ये नहीं चाह रहे कि प्लांट डिजीज हो जाए, बट वी वांट, हम ये चाहते हैं कि प्लांट में हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट ट्रांसफर हो जाए। तो ये जो पार्ट्स हैं जो डिजीज काजिंग हैं, विच आर रिलेटेड टू दी विच आर एसोसिएटेड विद द डिजीज, दीज पार्ट्स आर रिमूव। उसकी जगह पे हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड कर देते हैं, ये यू कैन सी द ग्रीन कलर, जीन ऑफ इंटरेस्ट अपना ऐड कर देते हैं, और कोई भी सिलेक्टेबल मार्कर भी ऐड कर देते हैं। व्हाई वी ऐड सिलेक्टेबल मार्कर, कौन बताएगा? Yes, of course. We add the selectable marker for the recruitment of the gene, for the selection of the bacteria, for the selection of the uh, our required segment. हम ये देखना चाहते हैं कि क्या हमारा जीन इसमें इंसर्ट हो भी चुका है या नहीं हो चुका। इस चीज़ को नोट करने के लिए हम selectable marker जो है वो यूज करवाते हैं। So what are the application of the agrobacterial mediated transformation? This is actually involved in the basic research. Uh, Basic research is plant transformation allow in vivo study of the plant genes. Uh, Here you can see there are many different types of the plants which can be transformed as a transgenic plant, which can be transformed or grown as a transgenic plant. By using this technique, we can uh, produce genetically modified plants. हम genetically modified plants बना सकते हैं। So for example, हमने इस टेक्निक को यूज करके बेसिलस थ्रियोजेनेसिस में इसकी एक्सप्रेशन करवाई। हमने बेसिलस थ्रियोजेनेसिस की टॉक्सिन्स इसमें इंट्रोड्यूस करवाए, and then transgenic plants expressed insecticidal BT genes
इंसेक्टिसाइडल जो बेसिलस thuringiensis की जीन्स थे वो इंट्रोड्यूस हो गए। अब जिस प्लांट के अंदर ये इंसेक्टिसाइडल जीन्स प्रेजेंट होंगे, that plant ultimately has no requirement for the spray of the insecticides. Okay, just insect will feed on that plant and will be killed because it contains toxins against that particular that because it contains the toxin against the insects. There are some other uses. It can be used in the short-term expression of the TDMA genes, give result faster than the generating transgenic plant, and this is actually easier to be handled right now. Okay. Summary, the development of the vector for the plasma transformation. I hope you people can now easily understand that how we could do this. This is also the part of some of your topics in the tissue culture. If you can see here, these are the diagrams regarding the tissue culturing. The introduced gene of interest into the tDNA region and introduced into the agrobacterium carrying VAR genes. The agrobacterium gene patients inoculate plant with the engineered agrobacterium and then regenerate the plant from the transfer site. See here, this is the agrobacterium. We transform its tDNA, we transform its tDNA, then insert it into the plant. Then we go for the growth of plant on a selective media. This is a selective media. See here you can see. This is the growth of plant on a selective media. This is selective media. When we grow the plant on a selective media, then these plants will grow like this one. When they will grow like this one. Then we will grow the plant into the pod. And when the plant will grow in the pod, now it means if they grow, it means they are ready to be cultured. Then we will plant these plants into the soil. Okay. I hope this is enough for today. This is enough. I'm hoping it will be. So, for example, this is agrobacterium containing bacteria. Okay, it is responsible to generate the opine. The agrobacterium with the TI plasmids will divide to make some more organisms. And this is, say, for example, the agrobacterium without the TI plasmid. When these both will be mixed, this will also contain a plasmid after the replication or because of the jumping in the plasmid into the second organism. This is a diagram showing how the transfer of this DNA take place. Say, for example, there are some signals which are required for the TI virulence gene, CI virulence gene. It will be it will be induced, and tDNA processing will start. And then after the replication, it will make the copy to be removed from here, and it will move from bacterial cells to the plant cells, where some proteins are responsible for the integration of that DNA into the plant genome. And then after its integration into the plant genome will express the tDNA, creating auxin cytokines and neurons. Infection by the agrobacterium rhizogenes lead to the production of large root mass rather than a tumor. Therefore, the large plasmid carried by the rhizogenes is called the root-inducing plasmid. This is actually uh, better for this actually creates a larger mass of the roots. The oncogenes on the A rhizogenes tDNA are not as well understood as the TI plasmid. Okay. Next is the formation of the non-oncogenic TI plasmid. How we produce our disarmed TI plasmid. Agrobacterium plasmid are disarmed by deleting naturally occurring tDNA encoded oncogenes. The genes which are responsible to
generate the gall are removed. The right and the left border sequence of the tDNA, which is required for the tDNA integration. These two borders are actually responsible for the integration. And then we will add a multiple cloning site into that particular in between these two arms, in between these two borders, an origin of replication, and then selectable marker gene is introduced. What are actually the marker genes? Marker genes are used for monitoring and detection of the plant transformation system in order to know whether the DNA has been successfully transferred into the recipient cell or not. Types, there are two types. One is the reporter genes, and second one are the selectable markers. Reporter genes, reporter genes क्या होते हैं जी? A gene that encode a product that can be easily assayed. ठीक है, like the Gus gene है, like the luciferase का gene है, like the green fluorescence protein. Selectable marker, a gene whose expression allow to identify a specific trait or gene in an organism. So, for example, mucin phosphotransferase 2 or hygromycin phosphotransferase. So, जो reporter gene will produce their products, and selectable marker gene will be responsible to identify the organism on the basis of their expression. Chimeric mixed marker, because promoter sequence and the transcription termination sequences are different in bacteria and plant, uh, because both of these sections are different in the plants, so we need a mixed marker. So a single native can, canal gene cannot be used. NPT2 coding sequences provided with the plant promoter, termination signal, and polyadenylation signals. Construction with the eukaryotic coding sequences with plant regulatory sequences are called the chimeric. Construction with the eukaryotic coding sequences with plant uh, regulatory sequences are called the chimeric selective marker genes. We make actually the mixed genes for the selection of the required genes. We make the mixed genes. We make a chimera for the selectable markers. The binary vector strategy is based on the observations that the tDNA does not need to be physically attached to the rest of the TI plasmid. A two plasmid system with the tDNA on a relatively small molecules and the rest of the plasmid in normal form is just as effective at transferring plant cells. In fact, some strains of atimifications and are related agrobacterium have natural binding plasmid systems. Binding means the two plasmid systems. Similar, this is at least similar to the co-integrate plasmid, but different by the presence of tDNA border sequence, a broad range host origin ORI sequence. Its major advantage is this small size. Elimination of the co-integrate formation before tDNA transfer to the host cell. Binary vector strategies, these are actually based on the observation that tDNA does not need to be physically attached to the rest of the TI plasmid. There is no requirement that tDNA remains attached with the plasmid. Binary means the two. So there must be the two plasmid. It must be the two plasmid system with the tDNA on relatively small molecules. It will be there will be two plasmids. Say for example, it will be the two plasmid, and tDNA will be present on the small molecule. Here, tDNA is present here. In fact, in fact, naturally, it is present in some strains of the bacteria, like the agrobacterium. The tDNA plasmid is small enough to have unique restriction sites and to be manipulated using the standard techniques. So, the tDNA plasmid can be altered. Transformation by co-cultivation by the X plant with the agrobacterium. Tissue plants and the protoplast are
co-cultivated with the atomization leaf discs, and the root sections are co-cultivated. After the few days, inoculated plant transfer to the regeneration media containing antibody to kill agrobacteria and second antibiotic to select the plant cells. Okay, I'm telling that tissue explants and the protoplasm are co-cultivated. First here the explant and the protoplasts are co-cultivated. Like you can say, leaf discs and the root sections are co-cultivated. Leaf discs and the root sections are co-cultivated. After a few days, inoculated plant transfer to the regeneration media. Inoculated plants are transferred to the regeneration media. This regeneration media will carry the antibodies which will kill the bacteria and also contain a antibiotic biotic to select the plant cells. After the 2 to 3 weeks, callus grow on the cut surface, begin to differentiate into the shoots. Shoots placed on the root generation media. After root formation, transformed into the soil. फर्स्ट हमने यहाँ पे अब देखें कि दिस इज द एक्स प्लांट हमने इसको यहाँ पे ग्रो करवाया ग्रो करवाने के बाद हमने से फॉर एग्जांपल इसको इन्फेक्ट किया हुआ था विद द बैक्टीरिया और इसमें हमने इनको को कल्टीवेट करवाया टू अलाउ द इन्फेक्शन इन्फेक्शन होने के बाद देन हम यहाँ पे इसको इंट्रोड्यूस करवाते हैं एंटीबायोटिक कंटेनिंग मीडिया पे ताकि वो बैक्टीरिया को किल कर दे और ट्रांसफॉर्म नॉन ट्रांसफॉर्म टिश्यूज हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं बाई यूजिंग द एंटीबायोटिक ओके देन ट्रांसफॉर्म टिश्यूज इनका कैलिस बनता है और ये ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं टू द मीडियम फॉर रिस्पॉन्सिबल फॉर द शूट डिफ्रेंशिएशन जब शूट डिफ्रेंशिएशन हो जाती है तो उसके बाद हम इसको ट्रांसफ़र करते हैं टू द रूट डिफ्रेंशिएशन मीडिया ताकि इसकी रूट्स डेवलप हो जाएं जब इसकी रूट्स डेवलप हो जाएंगी तो उसके बाद ये एडल्ट प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगा हम इसको कल्टीवेट करते हैं इसको हम कल्टीवेट करवाते हैं इनटू दी सॉइल में लेकर जाते हैं और फिर इससे हमें सीड्स मिलते हैं नेक्स्ट पे ये जो सीड्स हैं दीज सीड्स विल बी cultivated to know whether our gene interest is being transferring from one generation to the another generation. अगर ट्रांसफॉर्मेशन कैसे की जाए for the purpose of the transformation we need some equipments we need some processes to be responsible for the transformation. Cultured explants were sonicated with the plasmid DNA. कुछ methodologies हैं जिसकी बेस पे हम प्लांट्स में ट्रांसफॉर्मेशन करवाते हैं अल्ट्रासोनिकेशन हैं से फॉर एग्जांपल लिपोसोम मीडिएटेड जीन ट्रांसफर है वो कैसे करते हैं द डायग्राम इज शोन इज द इलेक्ट्रो अल्ट्रासोनिकेशन अल्ट्रासोनिकेशन में हम साउंड सोनिकेटेड वेव्स को यूज़ करते हैं ये सोनिकेटेड वेव्स जब सेल्स के साथ कोलाइड करती हैं तो इनकी वजह से सेल्स के ऊपर पोर्स जनरेट हो जाते हैं फ्रॉम दीज पोर्स इन पोर्स से जो मटेरियल है इट कैन बी easily transfer from outer side of the cell into the inner side of the cell, therefore vice versa. Cultured explants were sonicated with the plasmid DNA carrying the marker gene. Sonicated cells transfer to the selective media and then shoots grow. Liposome-mediated gene transfer bounded by the phospholipid bilayers. Phospholipid bilayer is present over there. Okay. Contains aqueous chamber having soluble molecules like DNA and the plasmid. By using the packed plasmid may fuse with the protoplasm. What is the electroporation? Then the second procedure is the electroporation. To be very simple, we provide the electric current to the cell. Okay, we provide the electric current to the cell by using the current. The pores are generated on the cell surface. A method used to apply an electric current across the cell membrane, resulting in temporary pores formation, enabling the uptake of the
exogenous molecule found in the medium to either the cytoplasm और इनटू द न्यूक्लियस। हम इसमें करते क्या हैं कि करंट शॉर्ट टाइम के लिए फॉर सेकंड माइक्रो सेकंड हम करंट सप्लाई करते हैं टू द प्लांट। जब प्लांट्स पे करंट हम अप्लाई करते हैं तो इस एप्लीकेशन की वजह से प्लांट की सेल सरफेस के ऊपर पोर्स जनरेट हो जाते हैं। इन पोर्स के जनरेट होने की वजह से जो एक्सोजीनस मटेरियल है वो इनसाइड द सेल मूव करता है समटाइम्स इनटू द न्यूक्लियस। अगर वो न्यूक्लियस में मूव कर जाए वहाँ पे रिकम्बिनेशन हो जाए तो हमारा काम बन जाता है, हमारा जो सेल है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है। Then the next method is the particle bombardment cells. आप इसको you can gene gun भी कहते हैं। This is also known as the gene gun. इस gene gun में होता ये है कि हम we use the particle bombardment device which is well known as the gene gun. It was developed to enable the penetration of the cell wall, penetration of the cell wall so that a genetic material containing a gene of interest can be transferred into the cell. This physical direct gene transfer method gene gun is used for the genetic transformation of the several organisms to introduce a device to introduce a diverse range of desirable traits. हम इसमें करते क्या है कि particles की bombardment करवाते हैं on the cell. Because of this bombardment, the gene of interest is introduced into the cell. Isolation of the desired genes from the source organism. हम इसमें करते क्या है, पहले हमने डिजायर्ड जीन को आइसोलेट किया, ठीक है जी, समझ में आ गया आपको। To develop a functional transgenic construct include the selected gene of interest, promoter to derive the expression, modification of the codon if needed। तो ये सारे प्रोसेसेस हमने अगर इससे ऐसे फॉर एग्जांपल हमने जीन को आइसोलेट कर लिया और उसके बाद उसको किसी प्लाज्मा में बनाना है या किसी वेक्टर में लेके जाना है तो हम ये सारी प्रोसीजर उसके साथ करेंगे। Then insertion of this transgenic construct into the useful plasmid। हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया इसको, अब प्लाज्मिड में लेकर आएंगे। और now we need to introduce the transgenes into the plant cells। जब हम अब इसकी कैसे हम इसको प्लांट सेल में लेके जाएंगे बाय यूजिंग द बम्बार्डमेंट, पार्टिकल बम्बार्डमेंट। जब ये प्लांट में चला जाएगा तो फिर उसके बाद वही प्रोसीजर के वही ग्रो करेंगे, रीजनरेट करेंगे एक्सेट्रा। दिस इज द स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। हम इस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को यूज करते हैं। अब पार्टिकल बम्बार्डमेंट मेथड में क्या होता है कि 1 to 2 माइक्रोमीटर के टंगस्टन और गोल्ड पार्टिकल हम यूज करते हैं। टंगस्टन या गोल्ड पार्टिकल्स हम यूज करते हैं। ये गोल्ड particles these are coated with the genetically engineered DNA are accelerated with the air pressure at high velocities and shoot into the plant tissues। हम इसमें हाई प्रेशर एयर प्रेशर यूज करते हैं, हाई वेलोसिटी से इसको शूट करवाते हैं onto the plant cell। This is the second most widely used method। बहुत ज़्यादा ये यूज होता है ये मेथड बिकॉज इसमें हमने स्प्रे करना है सेल्स के ऊपर अपने मटेरियल को, तो वो वहाँ से ट्रांसजेनिक बनाना उसको इजी हो जाता है। द डिवाइस एक्सेलरेट्स पार्टिकल्स इन वन ऑफ द टू वेज, बाय मींस ऑफ प्रेशराइज्ड हीलियम गैस, या हम इसमें यूज करते हैं, या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी रिलीज बाय द ड्रॉपलेट ऑफ द वाटर एक्सपोज टू द हाई वोल्टेज, या फिर हम इसको देते हैं। माइक्रो कैरियर्स हम मैंने आपसे ये कहा है कि टंगस्टन या गोल्ड पार्टिकल्स कोटेड विद द डीएनए आर कैरिड बाय द माइक्रो कैरियर्स which are the inserted into the apparatus and pushed downward at high velocity। The the macro projectile is stopped by perforated plate while allowing the micro projectiles to propel at high speed into the plant cell on the other side। Okay. So this is the macro carrier. This is the disk, micro or large assembly. This is the target cells। These are the DNA coated micro carriers। ये टारगेट साइट है, यहाँ पर आकर ये सेल्स के हम calculate हो जाते हैं। हम इसके अलावा जीन गन के अलावा ये दिस वाज वन एग्जांपल एंड दिस वन इज सेकंड एग्जांपल। हैंड हेल्ड गैस गन भी यूज कर सकते हैं। This is also responsible to introduce the DNA into the cells that are below the top surface layer of the tissues। One interesting use is the making DNA vaccine। This is being used in making the DNA vaccine। Genetically modified plants, ट्रांसजेनिक प्लांट्स की तरफ अब हम आते हैं। ट्रांसजेनिक प्लांट्स हम क्यों बनाते हैं? To get the high lysine contents, high lysine in the corn
एनहांस नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए, हार्बिसाइड्स टॉलरेंट प्लांट के लिए, बीटी कॉटन के लिए, मेल स्टीराइल हो जाते हैं प्लांट या मेल स्टीराइल प्लांट उनको बनाते हैं ट्रांसजेनिक प्लांट एज ए बायोरिएक्टर बनाते हैं। हाई लाइसिन कॉर्न सीड स्टोरेज प्रोटीन्स आर द सोर्स ऑफ द डाइटरी प्रोटीन्स। हाई लाइसिन कंटेंट हम चाह रहे होते हैं कि हमारे पास प्लांट में आए सीड ऑफ द लेग्यूम्स प्रोवाइड 70% ऑफ द डाइटरी रिक्वायरमेंट। Seed storage protein of the cereals called the prolamines, genes in the corn, maize lacking the lysine. में लाइसिन कम होता है। अगर हम if there is the requirement कि हमारे पास इसमें लाइसिन कंटेंट ज़्यादा है तो हम इस वजह से ये जो प्लांट्स हैं ये जो कॉर्न है इसको ट्रांसजीन करते हैं ताकि हमारे पास लाइसिन कंटेंट ज़्यादा है। Seeds are deficient in lysine and tryptophan content and to lesser contents methionine also. Conzine coding genes are sequenced. High lysine corn can be produced by genetic engineering. Site-specific mutagenesis can be done. हम site-specific mutagenesis करते हैं. High lysine gene coding sequences can be joined to strong promoters such as the CAM-V35S and introduced into the plant by the transformation. एनहांस नाइट्रोजन फिक्सेशन हम चाह रहे होते हैं कि जी हमारे पास जो फर्टिलाइजर का यूज़ है वो कम हो इन दी एग्रीकल्चर एफर्ट्स ऑन इंक्रीजिंग द बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन प्लांट्स के अंदर अपनी कैपेबिलिटी होती है नाइट्रोजन फिक्सेशन कर ले तो इसके लिए हम वी यूज एजोबैक्टीरिया एंड क्लैब्सिella कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू द अमोनिया वी नो कि क्लैब्सिella और एजोबैक्टीरिया इज रिस्पांसिबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू अमोनिया in Klebsiella 17 NIF gene nitrogen fixation gene organized in 7 operon very difficult to handle 17 genes. So these 17 genes are responsible actually for the nitrogen fixation. Herbicide tolerant plant हम ऐसे प्लांट्स को ग्रो करवाते हैं कि जो हार्बिसाइड्स को टॉलरेट कर सकें। जब हम हार्बिसाइड्स स्प्रे करवाते हैं तो देयर आर सम plants also which may be affected. Weeds compete with the crops for nutrition leads to the significant loss in the yield. Herbicides are used, but the issue is not solved according to the requirement. Broad spectrum herbicides may work, but also damage the crops. जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम हर्बिसाइड्स हैं वो हर्बिसाइड्स को भी खत्म करते हैं साथ में प्लांट्स को भी डैमेज करते हैं दैट्स व्हाई हर्बिसाइड्स टॉलरेंट प्लांट प्रोडक्शन इज अंडर कंसिडरेशन herbicides usually inhibit vital plant processes mostly herbicides inhibit essential enzyme functions so herbicides are overcome by overproduction of enzymes by mutations which are less sensitive for to herbicides इंसेक्ट रेजिस्टेंस के लिए मैंने पहले भी आपको एग्जांपल दी थी फॉर इंसेक्ट रेजिस्टेंस हम प्लांट बनाते हैं ताकि जो हमारे इंसेक्टिसाइड्स हैं उसका बर्डन एक फार्मर के ऊपर से कम हो ताकि प्लांट के अंदर अपनी ये कैपेबिलिटी हो कि वो जो इंसेक्ट्स हैं उनको कर सकें इसके लिए एग्जांपल है जी बीटी कॉटन की बेसिलस तुरंजिएंसिस को यूज़ करके बिकॉज ये इंसेक्टिसाइड्स बनाते हैं तो हमने इनके जो जीन्स हैं वो यूज़ करके बीटी कॉटन बनाई है दिस आल्सो हैपन इन पाकिस्तान मेल स्टेरिलिटी important to prevent the unnecessary pollination हम मेल प्लांट्स को स्टीराइल कर देते हैं produced by the introducing Barney's enzyme coding sequence RNA hydrolyzing enzyme inhibit the pollen formation like the transgenic plants transgenic animals are also produced we can also produce the transgenic animal for the study purposes इसमें करना क्या है हमने just for this purpose we need DNA which is injected into the nucleus of a zygote. The injected zygote is implanted in a pregnant female mouse. Then each of the offspring is examined for the presence of the injected DNA into the in the injected DNA to identify the transgenic mouse. Say for example here I will do mice. We mate mice from dark colored strain to obtain embryo at the blastocyst stage ये हमारे पास blastocyst stage के embryo आ गए then we culture these embryonic stem cells from the inner cell mass हमने blastocyst को
मीडिया पे कल्चर करवाया, देन ट्रांसफेक्ट द ईएस सेल्स विद द मार्कर डीएनए, हमने रिक्वायर्ड डीएनए था, ये जो मार्कर डीएनए है वो इसमें इंट्रोड्यूस करवा दिया। देन इंजेक्ट द ट्रांसफेक्टेड एम्ब्रियोनिक stem cell into the blastocyst from the light colored parent. We inject the transfected ES cells into the blastocyst of the light color parents. एक और ऑर्गेनिज्म था उसका हमने blastocyst लिया और इसको उसके साथ इंजेक्ट करवा दिया हमने. Implant the injected blastocyst into the light colored female. We injected it into the light colored female uh, to obtain light dark offspring. Light और dark offspring दोनों हमें मिले, हमने इसको इंजेक्ट कर दिया. तो होगा क्या, वी विल गेट द काइमेरा, हमारे पास एक मिक्स्ड ऑर्गेनिज्म आएगा, ये मिक्स्ड ऑर्गेनिज्म containing the properties of both the light color as well as the light dark color mouse. Now this chimera will be mated to the light colored mouse to obtain the offspring. जब हम इन दोनों को आपस में मेट करवाएंगे तो हमारे पास ये दो ऑर्गेनिजम्स आएंगे, एक लाइट कलर माउस आएगा और एक डार्क कलर माउस आएगा. ये जो डार्क कलर माउस इस काइमेरा और इसके क्रॉस से आ रहा है, दिस इज probably this is possibly transgenic. This could be possibly transgenic. As you people know, Dolly was cloned. The first sheep, the first organism that was cloned was a sheep. Dolly sheep was successfully cloned in Britain in 1996 by a scientist named Wilmot and was put down in February 2003 after developing a lung infection and arthritis. Although in 1996 में इसको बनाया गया था, इसको क्लोन किया गया था, but it was diseased हो गई थी and getting some problems there. Dolly was genetic copy of the Finn Dorest Eve. Her births more than 10 years ago showed that nuclei from specialized adult cells can be programmed into all the cells of an organism. The technique that led to the dolly is called the somatic cell nuclear transfer technique and has remained essentially unchanged over the last decade. Okay, this is complete procedure how the clone was made. This is the adult Pindorest Eve, and this is you can say the adult Scottish blackface Eve. Okay. Now what happened? The Findorest. This is the Findorest. This is the Findorest. It is this organism is actually the nuclear donor. One organism. Okay. टू मेक इट क्लियर, मैं बड़ी आराम से इसको पहले एक्सप्लेन करता हूँ. दो किस्म की शीप्स थी, इनमें से एक इसे फॉर एग्जांपल फिटडोरस थी और दूसरी जो थी स्कॉटिश ब्लैक है. इनमें से एक का एक शीप जो है इसे फॉर एग्जांपल फिटडोरस इज द न्यूक्लियस डोनर एंड ब्लैक फेस इज द न्यूक्लियर एक्सेप्टर या यू कैन से न्यूक्लियर रिसीवर. वो इसमें ये कि एक से एग्स को लेकर उसको फ्यूज करवाया गया दूसरे के साथ. किस तरीके से कि एक का एग लिया, एग लेने के साथ ही उसका न्यूक्लियस वहाँ से निकाल लिया, दूसरे का एग लिया, उसका न्यूक्लियस वहाँ से निकाल लिया. तो अब एक का न्यूक्लियस दूसरे के न्यूक्लियस के अंदर इंसर्ट कर दिया गया और उसको लेकर तो जो ब्लैक फेस थी दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर इंसर्ट करवाया गया और उसके बाद देखा गया कि कौन सा ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रोड्यूस होता है. Here you can see nucleus. This is the nucleus donor. This is the nucleus donor. Donor cells normal growth cycle will take place. डोनर सेल्स को कल्चर किया, कल्चर करवाने के बाद उनको न्यूक्लियस जो है वो रिमूव किया, रिमूवल ऑफ द न्यूक्लियस. और हुआ ये कि भी यहाँ से इस ऑर्गेनिज्म को लिया और इसका भी न्यूक्लियस उन्होंने रिमूव कर दिया, इसको ए न्यूक्लिएट कर दिया और इन दोनों को आपस में, इन दोनों सेल्स को आपस में इन्होंने ए न्यूक्लिएट करने के बाद इन दोनों सेल्स को आपस में फ्यूज करवा दिया. तो अब होगा क्या कि ये जो न्यूक्लियस है इट विल डिवाइड इन दिस यू कैन से इंटीग्रेट, यस इंटीग्रेट में
ये ग्रो करेगा। अब बिकॉज इसका एक न्यूक्लियस यहाँ पर आगे, you people know कि what nucleus this is especially for generation of these zygote, this is especially important कि आपके पास जो सेल्स हो, जो जो सेल हो उसको टू एंड हो जाना चाहिए। तो यहाँ से जो स्कॉटिश ब्लैक फिश थी, इसका एग लिया गया था, ठीक है, इसका एग लिया और एग को ई न्यूक्लिएट किया गया। और ये जो न्यूक्लियस डोनर है, इसकी मेमोरी ग्लैंड्स इससे सेल्स लिए, ठीक है, और उन सेल्स को रिमूव करके उनका जो न्यूक्लियस था वो इस एग के अंदर ट्रांसप्लांट कर दिया गया, इस एग के अंदर इंसर्ट कर दिया गया। जब ये इस एग के अंदर इंसर्ट हुआ तो अब उसमें सेल डिवीजन स्टार्ट होगी, एम्ब्रियो डेवलप होगा। ये जो एम्ब्रियो बना इसको एक और जो ब्लैक फेस हुई थी या जो भी थी हुई उसके अंदर इंसर्ट कर दिया गया। जिसके अंदर ये इंसर्ट किया जा रहा है embryo, that is known as the surrogate mother, and ultimately this gives the birth to the dolly. Gives the birth to the dolly. Cells taken from the 6-year-old finished Doris Eve and cultured in the lab. 277 cells then fused with 277 unfit fertilized eggs. ये ऐसा नहीं हुआ कि जो फॉरन से ही एक ही सेल का मिक्स किया और हो गया, नहीं। 277 reactions were studies. 29 viable reconstruct eggs survived, जिसमें से 29 eggs ने survive किया, and were implanted in the surrogate black face Eve. उसके बाद उसको black face Eve ने उनको 29 eggs ने survive किया और उनको black face Eve में इन्होंने incorporate कर दिया। उन 29 में से एक पे बर्थ हुई है, ठीक है, सही है, एक एक में बर्थ हुई है। The birth, the rate is 0.361%. So there is 0.361% chance at at onset once implanted. In nature, between 30 to 50% fertilized eggs develop. लेकिन अगर हम खुद से कर रहे हैं तो you can see कि 0.361% chance at once. जब 0.361% चांस है अगर हम ओवरऑल एग्स को देखें, और 3.4482% चांस है कि वो बर्थ दे जब उसको इम्प्लांट कर दिया जाता है। So this is enough for today. Tomorrow we will discuss about other things. कल हम इसके बारे में कुछ और देखेंगे कि फर्दर इसके बारे में क्या हो सकता है। So I hope this will be enough for all of you. Um, I'm trying my best to explain as I can, as more as I can explain. So hoping कि आपके ये काम आएगा. Good luck. We will meet inshallah tomorrow.